students. See, in earlier lecture we have discussed about PCI bus operations. How does the operations PCI take place, right? Now in today's lecture we are going to discuss about PCI read and write transaction. Means how does the transaction take place in case of PCI bus, right? What do you understand by word ट्रांजेक्शन? आप सब जानते हैं ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन. तो एक्चुअल रीड और राइट जो ऑपरेशंस होता है वो पीसीआई बस में किस तरह से होता है. रीड एंड राइट ऑफ ट्रांजेक्शन, हाउ डज इट टेक प्लेस इन केस ऑफ पीसीआई बस, दैट इज व्हाट समथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे, right? See, all the signals sampled on the rising end. In case of PCI bus, what happens? Whatever signal is being there, whatever signals are there, they sending receiving signals are there, they always are sampled on the rising end. किस एंड पे सैम्पल्स होते हैं सारे सिग्नल? राइजिंग एंड पे. Clear? And in this, the centralized parallel arbitration, it is basically centralized parallel arbitration take place in case of PCI bus. How? Overlap with the previous transaction. Whatever transaction is being done earlier to the current transaction. Suppose some current transaction is going on. Suppose some read and write operation is going on. So whatever read write operation is going on prior to that operations, right, it has been overlapped with the current operations, right? So prior operation is being overlapped with the current operation, or in other words you can say that the prior transaction is being overlapped with current operations or current transaction, and such term is known as centralized parallel arbitrations, in which previous transaction is overlapped with the current transactions, right? Now all the transfers are unlimited bursts. This is one of the major advantage, that the transfers are bursts, means they are not limited, they are not restrictions ki okay fine this many particular bits can be transferred. No, nothing is like that. There's no restriction like that. इस तरह का कोई restriction नहीं है. हमारा जो भी transfer होगा that is going to be burst, it's going to be unlimited, there's no limit of packets. You can transfer as much data as you want, right? Now address phase start by asserting frame hashtag. जितने भी हमारे एड्रेस फ्रेम होता है उसको हम किस तरह से असर्ट करते हैं, उसको कैसे स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्टेड बाय फ्रेम हैशटैग. सी, अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज फ्रेम हैशटैग डिनोट? सी, इट्स अ सिग्नल. फ्रेम हैशटैग इज नथिंग बट इट्स अ सिग्नल विच एक्चुअली इंडिकेट. व्हाट डज इट इंडिकेट? स्टार्ट एंड एंड ऑफ ट्रांजैक्शन. स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन इज बीइंग डिनोटेड बाय फ्रेम हैशटैग. Right, this is clear. What does the frame hashtag denotes? It is basically a signal. What it is? ये एक तरह का सिग्नल है जो क्या इंडिकेट करता है स्टार्ट और एंड ऑफ ट्रांजैक्शन. किसी भी ट्रांजैक्शन की स्टार्टिंग और एंडिंग को इंडिकेट करता है. इट इज़ द एड्रेस फेज दैट स्टार्ट बाय असर्टिंग फ्रेम हैशटैग. क्लियर? Now next cycle initiator asserts CMD and address. जो next cycle initiator होता है ये assert करता है command को और address को, right? This is clear. See, the data transfer happened. Now we'll understand when the data transfer happened. What are the causes that actually starts the data transfer? हमारा जो data transfer होता है, read and write transaction होता है, how it happens, this is something that we are going to discuss now. See, ERDY hashtag assert by master when ready to transfer data. अब जो ERDY hashtag इसे कौन assert करता है? See, we know the bus have two parts, that is master bus and the slave bus. Now they are saying ERDY hashtag is being asserted by whom? It is asserted by master. इसे master assert करता है when ready to transfer data. Whenever the master is ready to transfer data, then ERDY is being asserted by master. हमारा जो master जैसे ही data transfer करने के लिए ready होता है तो वो assert कर देता है ERDY hashtag को, right? Clear this is? Now let's move forward. Now TRDY hashtag assert by target when the ready to transfer the data. अभी हमारा जो भी टारगेट है, सी मास्टर तो ट्रांसफ़र करेगा डेटा को. अब टारगेट ऑब्वियसली इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड समवेयर दिस डेटा. तो जो हमारा TRDY है, दिस इज़ बीन असर्टेड बाय टारगेट इटसेल्फ व्हेन इट इज रेडी टू ट्रांसफ़र द डेटा. जो भी टारगेट है जब हमारा वो डेटा असर्ट करने के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो जाएगा तो वो क्या असर्ट कर देगा? TRDY हैशटैग.
Now transfer when both asserted on rising edge. अब now we have seen master क्या करता है, assert करता है IRDIY जब वो data transfer के लिए ready होता है, and target asserts TRDIY hashtag when it is ready to transfer the data. Now we know that the transfer always starts at the rising edge. We have seen this in the earlier edge. What all the signals are sampled at the rising edge. हम जानते हैं, we already know that, we are familiar with this, कि whatever transaction will take place, it will take place at rising end. So transferred when both asserted on the राइजिंग एंड, बोथ आर असर्टेड. जब दोनों की दोनों राइजिंग एंड पे असर्ट होगा तो हमारा ट्रांसफ़र शुरू होगा. और कौन से दो चीज़ें, IRDIY हैशटैग एंड TRDIY हैशटैग. जब ये राइजिंग एंड पे असर्ट हो जाएंगे तब हम ट्रांसफ़र स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन एक्चुअली स्टार्ट द ट्रांसफ़र व्हेन बोथ IRDIY हैशटैग एज वेल एज TRDIY हैशटैग DY हैशटैग इज असर्टेड ऑन राइजिंग एंड. क्लियर? नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेम हैशटैग. राइट, अब ये फ्रेम हैशटैग क्या है? डी असर्टेड व्हेन मास्टर्ड एक्सटेंड्स टू कंप्लीट ओनली वन और मोर डेटा ट्रांसफ़र. अब फ्रेम हैशटैग क्या है? हमने कहा था ये सिग्नल्स को स्टार्ट करता है और एंड करता है ट्रांजैक्शन को, राइट, कि भाई कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है. अब ये जो हमारा फ्रेम हैशटैग है ये डी असर्ट करेगा कब? व्हेन द मास्टर इंटेंड टू कंप्लीट ओनली वन और मोर डेटा ट्रांसफ़र. जब हमारा मास्टर, व्हेन मास्टर इज़ विलिंग टू कंप्लीट ओनली वन और मोर डेटा ट्रांसफ़र, एक या एक से ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर वो इंटेंड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इंटेंड करता है, तब हम डी असर्ट फ्रेम कर देते हैं. दैट इज़ फ्रेम हैशटैग. दिस इज़ क्लियर टू यू? एनी प्रॉब्लम? नो? नाउ शैल वी मूव फर्दर? ओके, फाइन. Now we'll understand PCI bus signals. What are the signals that are actually involved in PCI bus? हम देखेंगे कि PCI बस में कौन कौन से signals involved हैं, उनका क्या योगदान है, right? This is something that we are going to understand. Now if you'll see in the figure, a typical PCI read transaction figure, then you'll see at the x-axis we have two axes, x-axis and y-axis. Now at x-axis it is showing the various field. What are those field? Address phase, data phase, data phase, data phase, right? So first we have address phase, and after that in the precedings we have data phase, data phase, data phase, right? And if we'll see to the y-axis of the graph, then we'll see the clock, frame hashtag, add, CBE hashtag, IRDI hashtag, TRDI hashtag, and Dev cell hashtag. Now we'll understand what these things are. See, clock over here in the diagram are actually indicating this is the PCI input clock. So whatever it means input, it is this clock is indicating PCI input, right? So what this clock indicates? It indicates PCI input clock. Now we have frame hashtag. Our frame hashtag show what the frame hashtag is showing in this figure. इस figure में frame hashtag क्या show कर रहा है? It is actually showing the signal. Frame hashtag is a signal which actually indicates the start and end of the transaction. Whatever operation is being performed, read or write operation, that transaction is being signaled by frame hashtag which actually indicate the start and end of transaction. हमारा frame hashtag इस डायग्राम में क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है start और end transaction का, right? Clear? Now we have AD indicates the address. Now CBI, the bus command, right? Now we have IRDI. Now you will say, ma'am, what this IRDI stands for? See, IRDI is nothing but it is the assertion by इंडिकेटर. ये एक असर्शन है जो इंडिकेटर इंडिकेट करता है इट इज़ रेडी टू सेंड एंड रिसीव डेटा. आप समझ रहे हैं? ये IRDIY क्या है? इट इज़ द असर्शन बाय इंडिकेटर. ये कोई भी इंडिकेटर है उसका असर्शन है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये रीड और ये रेडी है सेंड और रिसीव, डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए. सिमिलरली आप पूछेंगे, मैम व्हाट डज दिस TRDIY हैशटैग इंडिकेट इन दिस फिगर? यहाँ पे जो TRDIY है ये इंडिकेट करता है क्या?
it actually tells the indicator that it is ready to send and receive the signal. ये signals को send और receive करने के लिए ready है. अब आप कहेंगे मैम ये IRDIY और TRDIY में क्या डिफरेंस है? वो भी send और receive को इंडिकेट कर रहा था, ये भी send और receive को इंडिकेट कर रहा है. सी यहाँ पे IRDIY क्या रिसीव कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है. इट इज सेइंग दैट इट इज रेडी टू सेंड एंड रिसीव डेटा. ये डेटा के सेंड और रिसीव को इंडिकेट कर रहा है, सर्शन को इंडिकेट कर रहा है. जबकि वेयरएज इन केस ऑफ TRDIY व्हाट इज हैपनिंग, इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट इट इज रेडी टू सेंड एंड रिसीव द सिग्नल्स. ये सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए रेडी. और ये यहाँ पे IRDIY बता रहा है कि ये डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए रेडी है. सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन TRDIY एंड IRDIY. TRDIY tells the indicator that it is ready to send and receive the signal, right? Whereas IRDIY, what does it indicate? It is the assertion by the indicator. What it is? It is the assertion by indicator which indicate that it is ready to send and receive data. Clear? Now after that, below that you will see DEV hashtag. Now what does this DEV cell hashtag indicate? Actually it indicate, what does it indicate? It's a device select. What it is? Device select. DEV stands for device, SEL stands for select. So it actually indicates the device select, right? All the parameters of this program, this figure is clear to you? Any problem? No? So let's move further. Now if you see the PCI master device, the clock as bidirectional, then we have frame, that is again bidirectional, then we have IRDIY, TRDIY that I have already explained you. Then you see device select, stop, and CB, AD. These are the various stuff which has been mentioned, indicated, right? I hope what is mentioned by various parameters and various signals and frames and all the parameters and read write transaction which has been mentioned by me is clear to you. And still if you find any problem, please feel free anytime to ask me. Thank you very much for watching this video, and let's move to other lecture.